Hello dear students, how are you? I hope the chapter 1 is clear to you and you have done your written work or the question answers you have done in your notebook and book work in your book. Now today we will start our new chapter, chapter 3. We are skipping the chapter 2. Firstly we are doing the chapter 3 that are working with MS Access 2010. First point come to in your mind that what is the MS Access? MS Access is a database. And how we can use this database? Firstly, what is the database? What are the types of the database and the structure of a database? In today's session, we will discuss these points. First, the definition of the database. What is the database? After that, how many types of the databases are there? There are two types of the database, flat file database and the relational database. And the third is structure of a database. Database का structure कैसा होता है? Database एक table की forms में होता है. There are the various tables who are linked to each other and they are sharing their data with each other. And in table का structure में कुछ main terms आती हैं that are related to table. Firstly, we will discuss these terms in structure of a database. Now, first point comes in our mind, what is the database? Before coming to the definition of the database, I will tell you, हम पुराने टाइम में भी database use करते थे, but that type of the database was manual. What do you mean by manually? Manually means कि हम उसे मैनुअली मीन्स कोई रजिस्टर या एनी पेज जिसपे हम एक टेबल क्रिएट करके सारा डेटा उसी पर लिखते थे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, चाहे वो बैंकिंग का डेटाबेस हो, चाहे वो स्कूल का डेटाबेस हो, स्कूल के सभी बच्चों की इंफॉर्मेशन हो, या कोई डायरेक्टरीज हो, या कोई बैंकिंग डेटाबेस हो. तो दैट इज वाज द इन द रिटन फॉर्म, इन द मैनुअली फॉर्म. Previously we used it in the manually form and now it is in the digital form, so we called it as a database. जो computerized form में data को store किया जाता है, तो that is known as the database. So let's come to the definition of the database. Yes, dear students, now this is the definition of the database. What I have written, it is an organized way of storing information. It helps us to manage and access large amount of information quickly and efficiently. As I told you, database is used to store a large amount of information. जब हमें बहुत सारी information एक ही place पर save करनी होती है, then we use the database. Now, what is the purpose of this database? It helps us to manage and access the large amount of information quickly and efficiently. Through this, we can get our information quickly and efficiently. How you can do this? For example, when you are opening the Google and as you just write in the search box of the Google and they start searching quickly and proper pages, it will display you that is efficiently. Similarly, database is used to store the information. With the help of this database, you can access your information very quickly and very efficiently. Now, I will give you the example of our school. In our school, we are using the school panel. In school panel, there is the information of each and every student who is in the DPS school. Whenever we have any query about any student, we just enter the name of that student and the class of that student. Just as we just enter, the whole information about that students will be displayed there. So this is the benefit of our school database. Ab in general life, what are the examples of the database? Like dictionary, alphabetically data is stored in the dictionary. Just go to the alphabet according to your requirement and you will open that. You will open that. You can search that word which you want to search in your dictionary. That is the live example of this. Telephone directory, that is also an example of the database. School database, in which all the information of the schools is reserved. Bank database, in which all the
account number which are related to that bank, the complete information of that account number according to that account number is stored in the banking database. As we enter the account number, all the information related to that account, all the FDs, all the saving accounts and any other PF account, that all will be displayed there. Now, as I told you, these are the examples of the school databases like dictionary, directory, school database and the banking database. So in our daily life, we are using the such type of database that is in which the large amount of information is stored, and we can access our information quickly and efficiently. Plus, one other plus point of the database is that in this you can do the addition, you can do the subtraction, you can do the deletion of any record. Suppose I am taking the example of the banking database. In banking database, if a new customer open its account, then we can easily insert the information about that person. So easily insertion is there in the database. Just entering the data through a form, we can insert that record of that person into that bank database. If the person is withdrawing some money, then that transaction will be automatically saved in the banking database. If there is some changes in the account of that person, some modification has done, he is changing his branch of the, suppose one person has an account in the SBI bank and he is changing the branch of the SBI to some modification that has to be done, that is easily we can easily done it through a database. So these are the benefits of the database. It can stores the information, large information. It is proper organized way of storing the information. It helps us to access and manage large amount of information. We can quickly and efficiently access the information, and insertion, deletion and modifications are very easy in a database. Now our next topic is types of database. Database कितने तरह का होता है? Database is of two types. First is flat file and second is relational file. What is the flat file? Flat file means if you want to store the small amount of the information, then we use the flat file database. And if we want to store a large amount of information, in that case we will use the relational database. Now the second point is flat file is there is no relationship between the tables, but in relational database there exists a relationship between the tables. Now what is the relationship? Suppose we have maintaining a database of our school. There is the one table of the library, there is the one table of the accounts department and one table of the class teacher, student information. If each other, the library department and plus the account departments both wants to use the student information, then we have made the three tables like this. Table 1, table 2, 1, 2 and 3. ये student information है, ये library है, and this one is accounts, or this is the student. And library wants to use the student information and accounts department also use. Then we are linking these three tables. This is linked to this and this is also linked to this. Then both library and accounts can access the student information table. So there should be, then we have to create a relationship between all the tables, and this relationship can be maintained through a relational database.
and in flat file database there is no relationship between the tables. Now what are the examples of the flat file and the relational database? First is example is of the flat file database, that is the MS Excel. You have seen there are the various workbooks in the MS Excel and various sheets between one workbook. There is no relation of the one sheet to the another sheet. If any another sheet wants to, if sheet number 2 wants to use the data of the sheet number 1, then we have to create a reference to that data. तो हमें इसको रेफ़र करना पड़ता है, वो डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं कर सकते MS Excel में. एक शीट दूसरे शीट का डेटा डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकती. बट इन रिलेशनल डेटाबेस हमारा रिलेशन, उनके साथ रिलेशन होता है. ऑल द टेबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. As they will create a relationship, they can use the data of any sheet with each other. They can share their data. Then the example of the relational database is MS Excel, SQL and Oracle. And today's chapter is MS Excel. How we can create a relationship, that I will teach you further. So don't worry what is the relationship. अभी जस्ट आपको इतना ही समझना है. रिलेशनशिप मीन्स टेबल की लिंकिंग. फ्लैट फाइल्स में टेबल्स की आपस में लिंकिंग नहीं होती, बट रिलेशनल डेटाबेस में टेबल्स आर लिंक्ड टू ईच अदर. एंड एग्जांपल्स आर MS Excel, SQL and the Oracle. Now I think up to till now it is all the concepts are clear to you. What is the database and what are the two types of the database, examples of the database. Now we will move to the third point, that is what is the structure of the database. Our next topic is structure of a database. Now what is the structure of a database? डेटाबेस का स्ट्रक्चर टेबल से बनता है. सो टेबल्स आर नोन एज द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डेटाबेस. इन डेटाबेस देर आर द वेरियस टेबल्स एंड व्हेन दे आर लिंक्ड टुगेदर देन कंबाइनली वी कैन से इट इज़ अ डेटाबेस. तो बहुत सारे टेबल्स हैं और हम उन टेबल्स को आपस में लिंक कर देते हैं. व्हेन दीज टेबल्स आर लिंक्ड टुगेदर देन इट इज़ नोन एज द डेटाबेस. नाउ I am taking an example of a table. I have given a name of the table, that is the student. This is the student table in which we have taken the 5 columns. One is the roll number, father name, English, Hindi, Maths जो marks ले रहे हैं, and this is the fields of the database. अब now the question arises, what are the fields of table? What are the fields of the table? What are the records of the table? What is the data of a table? Now what is the fields of a table? There are the various columns in a table. एक टेबल में, एक टेबल किससे मिलकर बनती है? रोज एंड कॉलम से मिलकर. एंड वट एवर द नेम वी आर गिविंग टू अ कॉलम, दैट इज नोन एज द fields. अब ये हमने एक स्टूडेंट टेबल ली है, इसमें 5 कॉलम्स बनाए हैं. पहला कॉलम रोल नंबर का है जिसमें रोल नंबर आएगा. नेक्स्ट फादर नेम, नेक्स्ट इंग्लिश मार्क्स, नेक्स्ट हिंदी मार्क्स, नेक्स्ट मैथ्स मार्क्स. देन दीज 5 कॉलम्स आर नोन एज द fields. इनको हम क्या बोलेंगे? fields बोलते हैं. और वेन एवर वी आर एंटरिंग द डेटा इन इट, दिस वन, तो एक पर्सन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, रोल नंबर 1 की इन्फॉर्मेशन क्या है? रोल नंबर उसका 1 है, फादर नेम उसका राज है, इंग्लिश में मार्क्स उसके 48 है, हिंदी में 65 एंड मैथ्स में 60. देन दिस कंप्लीट रो इज नोन एज द रिकॉर्ड, दिस वन. देन रोज आर नोन एज द रिकॉर्ड्स. तो देयर आर द वेरियस रोज 1, रोज 2, रोज 3. तो जितनी भी रोज़ हैं वो सब क्या कहलाती हैं? रिकॉर्ड्स. और उन रो में जो इंडिविजुअली उसकी वैल्यूज़ पड़ी होती हैं, दैट इज़ नोन एज द डेटा. जैसे इसके अंदर रोल नंबर का डेटा क्या है? 1, 2, 3. फादर नेम में डेटा क्या पड़ा है? राज, नितिन एंड देव. इंग्लिश में मार्क्स क्या है? हिंदी में मार्क्स क्या है? तो दीज आर नोन एज द डेटा.
इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा. द वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर सेल इन अ कॉलम is known as the data. So I think these 3 points are clear to you. What are the fields, what are the records, and what is data. This is clear. Now the next 3 points arises in the table. What are the 3 terms? The 3 terms of the tables are queries, forms, and the reports. What are the queries, what are the forms, and what are the records? Now the next 3 terms of the tables are queries, forms, and the reports. What are the queries, what are the forms, and what are the reports? Now the queries are the questions. अगर हमें कुछ क्वेश्चन करते हैं टेबल से और वो उसका आंसर देती है, that are known as the queries. Like मैंने एक डेटाबेस बनाया स्कूल का और उस डेटाबेस में से मुझे कुछ रिकॉर्ड्स चाहिए, कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स चाहिए, तो मैंने क्वेश्चन अराइज किया, प्लीज़ डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम क्लास 8th हु लिखा है या हूँ, प्लीज़ डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास 8th हु लिव्स इन हुडा. डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स आएगा यहाँ, रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स. उन बच्चों का रिकॉर्ड शो करे क्लास 8th की टेबल में से जो बच्चों के एड्रेस क्या है, हुड्डा आता है. तो उस पूरे स्कूल में से पहले वो 8th की टेबल को सर्च करेगा, फिर 8th की टेबल में से एड्रेस फाइंड आउट करेगा. जिन जिन बच्चों का एड्रेस हुड्डा में आता है सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड शो ऑफ करेगा. तो दिस इज़ नोन एज द क्वेरी. जब हम क्वेश्चन अराइज करते हैं और वो हमें आंसर देता है तो डेटाबेस की टर्म्स में हम उसे क्वेरीज बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ द फॉर्म्स. आपने बहुत सारे फॉर्म फिल किए होंगे अपनी लाइफ में, गूगल में भी आपने बहुत सारे फॉर्म फिल किए हैं. जब आप अपना ईमेल आईडी बनाते हो तो भी एक फॉर्म फिल करते हो. ऐसे ही डेटाबेस में हम फॉर्म्स यूज़ करते हैं. उस फॉर्म्स को खोलकर हम, अगर हमने एक टेबल क्रिएट कर ली, उसमें 10 से 15 एंट्रीज हम कर चुके हैं और 1-2 दिन बाद हमें 2-3 और एंट्रीज आती हैं, हमें अपडेशन करनी है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ इंसर्शन करना है, तो हम फॉर्म्स ओपन करेंगे और उसमें जो रिकॉर्ड्स डाल के नीचे इंसर्ट बटन आएगा उसको क्लिक करते जाएंगे तो वो रिकॉर्ड्स वहाँ जाकर डेटाबेस में सेव हो जाएगा. जैसे फॉर्म्स में आ रहा है रोल नंबर 4, फादर नेम मैंने डाल दिया नवीन, इंग्लिश के मार्क्स, हिंदी के मार्क्स, ऐसे मैथ्स के मार्क्स. तो मैंने एक न्यू रिकॉर्ड डाला जिसका एक फॉर्म बना हुआ था. 3 रोल नंबर तक तो हमने टेबल क्रिएट की थी, तो मैंने रोल नंबर 4 से एक नया रिकॉर्ड बना दिया और उस फॉर्म के अंदर मैंने सारी एंट्रीज फिल कर दी. Whenever you fill all the entries in this table, then it will be automatically inserted in the table. अब इसके बाद जब MS Access में आप टेबल ओपन करोगे तो उसके अंदर 3 की जगह कितने रिकॉर्ड्स मिलेंगे आपको? 4 रिकॉर्ड्स मिलेंगे. So this is the purpose of the form, to insert the new data and to delete a previous one and to do some modification. We use the forms in the MS Access. Now next point comes, that are the reports. अब reports क्या है? That is when we want the output of a data in a printable form, that is known as the reports. अब मुझे reports चाहिए. मान लो प्रिंसिपल मैम ने कहा कि मुझे सिर्फ उन्हीं बच्चों का रिकॉर्ड चाहिए जिन बच्चों के मार्क्स 60 या 60 से अबव हैं इंग्लिश के अंदर. तो पूरे डेटाबेस में से वो सर्च करेगा और उसके बाद उसको एक प्रिंटेबल फॉर्म, एक प्लेन पेपर के ऊपर बहुत अच्छे से फॉर्मेट में शो कर देगा. जैसे इसने 3rd और 4th रोल नंबर ही फाइंड आउट किया. अब इसमें जो कोई ग्रिड लाइन नहीं होगी, ये टेबल की तरह, जैसे ये टेबल्स होती है तो टेबल की तरह एक ग्रिड लाइन नहीं आएंगी. सिंपल प्लेन पेपर पे एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में जो आपको आउटपुट दे देता है, दैट इज़ रिपोर्ट. पहले हम क्वेरीज देंगे, क्वेरीज में टेबल्स में हमें आंसर मिलेगा, उसके बाद हम रिपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे और इट विल गिव यू द आंसर इन अ प्रिंटेबल फॉर्म. सो दिस इज द पर्पज ऑफ द रिपोर्ट्स. नाउ आई थिंक टुडे वी हैव डन व्हाट इज डेटाबेस, how many types of the databases are there, and what is the structure of a database. In a structure of a database we discuss the 6 term, what is table, what are fields, what are records, and what is data, what are queries,
what are forms, and what is the purpose of the reports. I think these 6 terms are clear to you, and that is already given on your book page, in your book page number 34 and 35 in the chapter number 3, working with MS Access. You can read out from there also. I think all the concepts will be clear. Still, if you are having any query, you can send your query on my WhatsApp number. Thank you and have a nice day.